Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Iram Munir and I am head of CIT department at Government College of Technology, Lytton or Lahore, and also doing PhD in computer science. Today I am going to share my review of a very thought-provoking TED Talk, the titled "What New Power Look Like," presented by Jeremy Heimans. Let me begin with a simple question. Who has the power in today's world? It is only government, CEOs, political leaders, large organizations, and institutions. Or can ordinary people also create powerful change? This is exactly the question Jeremy Heimans explores in this TED Talk. And the most interesting message I took from this TED Talk is power is no longer only something that a few people possesses. In the digital and connected world, power can be created, shared, and activated by many people. That is what Jeremy Hymans calls new power. Before discussing the talk, let me briefly introduce the speaker. Jeremy Hyman is an Australian born activist, entrepreneur, and movement builder. He is the co founder and CEO of Purpose, an organization focused on building movements and using participation to create social change. He has also been involved in major online citizen movement, including Get Up in Australia and Awaz, a global online civic movement. This TED Talk describes him as an activist who has worked on harnessing social, economic, and technological models to build movement with impact. His work is particularly interesting because he comes from world of activism, but his ideas are also highly relevant to business, leadership, technology, education, politics, and social media. His central argument is that the way people exercise power is changing. The way people exercise power is changing. The most important concept in this TED talk is the difference between old power and new power. Jeremy Hymans explains that traditional power is generally contracted. For example, government has authority. A CEO controls an organization. A university, a university administration make decisions. A media company controls what information it distributes. This is what we can call old power. Old power generally works through control, hierarchy, authority, ownership. It is concentrated in the hands of a relatively small number of people. But new power works differently. New power comes from participation, collaboration, network sharing, and collective actions. Instead of asking who controls this, we start asking who is participating in this. That is a major shift. Jeremy and his co author Henry Thames describes the difference very effectively. Old power behaves like a currency, while new power behaves more like a current. Currency is something you can hold, but a current flows. That metaphors makes the
concept very easy to understand. Hmm. Let me explain this difference with a simple comparison. Old power is top down, hierarchical, controlled by a few uh, people, leader driven, less participatory, based heavily on ownership and authority. For example, imagine a traditional organization where the director makes a decision, manager communicate it, and employees simply follow it. This is old power structure. New power. New power is networked, participatory, peer driven, collaborative, open, and distributed. Here, people don't simply receive instruction, they contribute, they share, they create, uh, they influence, and they organize themselves. And technology has made this possible on a massive scale. One of the strongest aspect of our talk is the connection between technology and participation. The internet, social media have dramatically reduced the barrier to participation. In the past, if you wanted to influence thousands or millions of people, you need a television channel, newspaper, publishing company, or large organizations. Today, a person with a smartphone can potentially reach millions. A single video can become viral. A hashtag can become a global movement, and a crowdfunding campaign can collect money from thousand of individuals. An online community can organize people around a common cause. So, technology has not simply made communication faster, it has changed who can participate in power. Uh, Jeremy Heimans uses examples from business, technology, and social movements to demonstrate his argument. Think about platforms such as Airbnb. A traditional hotel company owns buildings, rooms, and infrastructure. But Airbnb created a network in which ordinary people could participate by offering their homes or rooms. The platform coordinates participations among large number of people. Another example is Kickstarter, where creative projects can receive financial support from many individuals rather than relying entirely on traditional and institutions or investors. These examples show how the crowd can become an active uh, participant rather than simply a customer or consumer. This TED Talk itself is another interesting example. People don't simply consume ideas, they share TED Talks, discuss them, translate them, teach them, and spread them. The idea become more powerful as people participate in spreading it. For me, this is probably the most powerful part of Hyman argument. New power has transformed social movements. People can now organize around an issue without necessarily having a traditional organizations behind them. A movement can begin with an idea, a story, hashtag, or shared experience. People participate because they believe in the cause. This changed the traditional concept of leadership. A movement may not have one powerful leader, instead, it can have mm, many participants, many voices, and many forms of leadership. This is why movement can grow extremely quickly.
The power comes from the network. This is where I think Jeremy Hyman's idea becomes especially important. We should not assume that new power is automatically positive. New power is simply a new way of organizing and exercising influence. It can be used for positive purpose. For example, social awareness, education, fundraising, disaster relief, community development, political participation, innovation. But the same network effect can also be used to spread uh, misinformation, manipulation, hate, polarizations, harmful ideas. So the important question is not is new power good or bad? The better question is who is using this power for what purpose and with what responsibility. This is particularly relevant in today's world. Our artificial intelligence, social media, and digital communities. In my opinion, one of the great strengths of this TED Talk is simplicity. The concept of powerful can sound complicated, but Hyman's give us a very simple framework. All power, all power is equal to power held by a few. New power is equal to power created and activated by many people. So, as someone working in education and technology, I find this concept particularly relevant to education. Traditionally, education was largely teacher centered. The teacher had the knowledge, teacher delivered the lecture, student listened and took notes. But today's digital environment has changed this model. Student can search information, create contents, collaborate online, use AI tools, participate in communities, learn from experts around the world, and learn from experts around the world. Share their own knowledge with them. The teacher is no longer simply a source of information. The teacher increasingly become a facilitator, mentor, designer of learning experience and guide. That is a form of new power. So the talk also changed the way I think about leadership. Traditional leadership often asks, how can I control my team? Modern leadership should increasingly ask, how can I empower my team to participate? So, if I had to summarize my biggest learning from Jeremy Heimans in one sentence, I would say in the connected world, influence increasingly come from participation rather than possession. We are living in an age where people don't just consume information, they create it. They don't just watch movement, they join them. They don't just use produce products, they review them, modify them, recommend them, and sometimes help build them. This is the fundamental shift that Hymans wants us to understand. So, in conclusion, what is new? It is not simply about having more followers. It is not simply about going viral. And it is not about simply about using social media. New power is fundamentally about participation. It is about people coming together. It is about network. It is about collaboration. It is about giving people the opportunity to contribute. So I would like to end with an one question. If power is no longer only in the hand of a few, then how will you use power you already have? So we will meet in next episode. Until that, keep growing, keep learning. Uh, I hope this information will be fruitful for you. Thank you so much.
जी नाज़रीन, अब मैं ये रिव्यू जो है ये उर्दू में पेश करना चाहूँगी। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन और लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। और इसके साथ-साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो आज मुझे जिस टेड टॉक का रिव्यू करने का मौका मिला है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है, जो कि जेरेमी हाइमन्स ने पेश की। तो मुझे ये मौज़ू बहुत ही अच्छा लगा। ये एक फ़िक्र अंगेज़ और जिसमें ये मतलब इस टेड टॉक में ये समझाने की कोशिश की गई है कि आज की दुनिया में ताकत का तस्वुर किस तरह तब्दील हो रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आज की दुनिया में ताकत किसके पास है? क्या ताकत सिर्फ़ हुकूमतों के पास है या ताकत सिर्फ़ बड़े इदारों, कंपनियों और सरबराहों के पास है या फिर आज एक आम इंसान भी ताकतवर तब्दीली ला सकता है? जेरेमी हेमंड्स की गुफ्तगू हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल और बाहम जुड़ी हुई दुनिया में ताकत सिर्फ चंद लोगों के हाथ में मौजूद नहीं रही, बल्कि आम लोग भी इज्तमाही तौर पर ताकत पैदा और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो हमारे स्पीकर हैं जेरेमी हाइमन्स अ, एक ऑस्ट्रेलवी निजात समाजी कारकुन हैं, कारोबारी शख्सियत और तहरीकें बनाने वाले माहिर हैं। एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन पर्पस नामी जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी शरीक बानी और सीईओ भी हैं और मुख्तलिफ समाजी और शहरी तहरीकों में भी हिस्सा लेते हैं, जिनमें गेट अप और आवाज़ के नाम से एक तहरीकें ऑनलाइन तहरीकें हैं। इनका काम बुनियादी तौर पर इस बात से मुतल्लिक है कि वो टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और आम लोगों की शिरकत को इस्तेमाल करते हुए मुआशरे में पॉज़िटिव चेंज कैसे पैदा कर सकते हैं, मतलब इसका तसव्वुर देते हैं वो। इसी तजर्बे की बुनियाद पर जेरेमी हाइमन्स ने न्यू पावर का तसव्वुर पेश किया, जो कि बेसिकली हमारी इस सारी गुफ्तगू में न्यू पावर का तसव्वुर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अ, अच्छा, न्यू पावर बेसिकली हम सवाल उठाते हैं कि न्यू पावर है क्या? जेरेमी हाइमन्स ताकत की 2 शक्लें बयान करते हैं। एक क्या? एक ओल्ड पावर यानी पुरानी ताकत और एक न्यू पावर नई ताकत। पुरानी ताकत आमतौर पर चंद अफ़राद, अदारों या तंज़ीमों के पास हुआ करती थी। मसलन हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, एक कंपनी के सरबराह के पास फ़ैसला करने का इख्तियार होता है और एक अदारे का सरबराह अपने मुलाज़मीन के लिए फ़ैसला करता है। ये ताकत आमतौर पर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यानी एक फ़ैसला करने वाला बहुत से लोगों को इस फ़ैसले पर के लिए अमल करने पर मजबूर करता है। ये है ओल्ड पावर। न्यू पावर क्या है? नई ताकत का तसव्वुर इससे मुख्तलिफ है। न्यू ताकत में मतलब नई ताकत में आम लोग सिर्फ़ फ़ैसले कबूल नहीं करते, बल्कि वो खुद भी इसमें शामिल होते हैं और ताउन करते हैं, ख़यालात पेश करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं और इज्तिमाई तौर पर तब्दीली पैदा करते हैं। इसलिए नई ताकत को हम यूँ समझ सकते हैं कि ओल्ड पावर में ताकत चंद लोगों के पास होती है, जबकि न्यू पावर में ताकत बहुत से लोगों लोगों की शिरकत से पैदा होती है। ये बहुत अहम फ़र्क है इसमें। अच्छा, इस तस्वुर को एक आसान मिसाल से हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक रवायती इदारे में सरबराह कोई फ़ैसला करता है, तो फिर क्या होता है कि मैनेजर इस फ़ैसले को मुलाज़मीन तक पहुँचाता है, मुलाज़मीन इस फ़ैसले पर अमल करते हैं। ये एक ओल्ड पावर की मिसाल है। ठीक है? इसमें हुक्म देने की बजाय मतलब जो नई पावर है उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब सारे मिल के फ़ैसला करते हैं, हुक्म देने की बजाय शिरकत होती है, कंट्रोल करने के बजाय ताउन होता है और ख़ामोश पैरवी की बजाय ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। सो उम, मेरे ख़्याल में इस टेड टॉक का एक बहुत ही अहम पहलू जो है वो टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आम इंसान की ताकत में बहुत इज़ाफ़ा किया है।
माज़ी में अगर कोई शख़्स अपनी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहता था तो उसको इसे टेलीविज़न, अख़बार या किसी बड़े मीडिया अदारे की ज़रूरत होती थी। तो लेकिन आज एक आम शख़्स के पास सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो अपनी बात हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है। एक वीडियो वायरल हो सकती है, एक हैशटैग जो है आलमी तहरीक बन सकता है। एक ऑनलाइन मुहिम लोगों को एक मकसद के लिए इकट्ठा कर सकती है। एक शख़्स अपनी महारत और इल्म को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पावर का एक तस्वुर है। तो इसमें ये सोशल मीडिया जो है वो नई ताकत का तस्वुर पेश करता है। उसमें ये होता है कि मतलब आप देख लें जैसे फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है। ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ एक आम आदमी अपना मवाद जो है तख़लीक करके लोगों के साथ शेयर कर रहा है। यानी कि कोई भी आम आदमी है वो अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता है। तो न्यू पावर जो है ये इसका पॉज़िटिव यूज़ क्या है कि अ, नहीं तो अगर बहुत से पॉज़िटिव मक़ासद के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तालीम के लिए कर सकते हैं, समाजी आगाही के लिए कर सकते हैं, फलाही कामों के लिए कर सकते हैं, फंड रेज़ कर सकते हैं और कुदरती आफ़ात में हम लोगों तक अपनी तक वो जो उनकी हेल्प है वो कर सकते हैं। और कारोबारी मंसूबों के लिए लोगों को बता सकते हैं, मुआशरती मसाइल हल कर सकते हैं और आज के लोग ऑनलाइन मिलकर ऐसे काम कर सकते हैं जो माज़ी में सिर्फ़ बड़े अदारे करते थे। इसके अलावा ऑनलाइन मतलब तालीम हासिल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से जो न्यू पावर है इसके बहुत सारे पॉज़िटिव इस्तेमाल हैं। अगर जेरेमी हाइमन्स के तसव्वुर को एक तनकीदी नज़र से देखना चाहूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं इसको तनकीदी नज़र से देखना चाहूँ, नई ताकत बज़ाते खुद अच्छी है और ना ही ये बुरी है। असल सवाल ये है कि इस ताकत को कौन इस्तेमाल कर रहा है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर नई ताकत को तालीम, तरक्की और पॉज़िटिव चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर एक गलत अ, मालूमात, नफ़रत, अफ़वाहों, धोखे या लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही ताकत नुकसानदेह भी हो सकती है। आज सोशल मीडिया पर एक गलत खबर भी बहुत तेज़ी से फैल सकती है, इसलिए नई ताकत के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। सो मेरे ख़्याल में दोनों ही मतलब मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा, यानी ओल्ड पावर का भी और न्यू पावर का भी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे अदारों में मतलब ओल्ड पावर का तस्वुर मौजूद है, जैसे हुकूमतें हैं, बड़े-बड़े अदारे हैं, कंपनियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, सब में। तो इसलिए इनका एक कॉम्बिनेशन है। सो मेरे लिए इस टेड टॉक का तालीम के साथ बहुत अहम ताल्लुक़ लगता है मुझे तो इसका। रवायती तालीम में उस्ताद मालूमात का बुनियादी ज़रिया होता था। उस्ताद लेक्चर देता था, तलबा सुनते थे, तलबा नोट्स बनाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इस निज़ाम को बदल दिया है। आज तालिब इल्म खुद भी तख्लीक करता है, ऑनलाइन कोर्सेज़ करता है, दुनिया भर के माहिरीन से सीखता है, एआई के टूल्स इस्तेमाल करता है और दूसरे तलबा के साथ ताउन करता है। इसलिए आज उस्ताद सिर्फ़ मालूमात देने वाला शख़्स ही नहीं है, बल्कि उस्ताद रहनुमा भी है, रहबर भी है, मेंटर है, लर्निंग फैसिलिटेटर का किरदार भी अदा करता है। ये न्यू पावर के तस्वुर के बहुत करीब है। सो ये टेड टॉक हमें ये सबक देती है कि रवायती क़यादत का सवाल मतलब जो लीडरशिप है उसके लिए इसका ये जो पैगाम है वो ये है कि मैं अपनी टीम को कैसे कंट्रोल करूँ इस सवाल की बजाय हम ये मतलब लीडर्स को ये कहना चाहिए कि मैं अपनी टीम को कैसे बाख्तियार बनाऊँ। एक अच्छा लीडर हर सवाल का जवाब खुद देने के बजाय कोशिश करता है कि वो अपनी टीम के लोगों को अपनी राय देने का मौका दे। वो लोगों की सलाहियतों पर एतमाद करता है, ताउन को फ़रोग़ देता है और लोगों को तब्दीली का हिस्सा बनाता है। इसलिए मुस्तक़बिल की क़यादत शायद कमांड एंड कंट्रोल ना हो, बल्कि इससे ज़्यादा कनेक्ट एंड एम्पावर होगी इंशाअल्लाह। अम, अगर मुझे जेरेमी हेमंड्स की पूरी गुफ्तगू एक जुमले में बयान करने का मौका मिले तो मैं यही कहूँगी कि आज की दुनिया में असर और रसूख सिर्फ़ ताकत रखने से ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर चलने से पैदा होती है।
تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہر انسان تبدیلی کا حصہ بن سکتا ہے۔ ایک موبائل فون صرف یہی نہیں کہ وہ ایک مطلب صرف ایک موبائل فون ہے، بلکہ وہ ایک کیمرہ بھی ہے، ایک مائک بھی ہے، تعلیمی ذریعہ بھی ہے اور میڈیا پلیٹ فارم بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو میں تو اس کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گی کہ جیرمی ہیمنز کی ٹیڈ ٹاک نیو پاور ہمیں طاقت کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ نئی طاقت صرف زیادہ فالوورز حاصل کرنے کا نام نہیں، نئی طاقت صرف سوشل میڈیا استعمال کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ نئی طاقت کا اصل مطلب ہے شرکت، تعاون، اجتماعی عمل اور لوگوں کو بااختیار بنانا اور پازیٹیو تبدیلی لے کر آنا۔ سو میرے خیال میں جیرمی ہیمنز کی ٹیڈ ٹاک کا اصل پیغام یہی ہے کہ طاقت صرف وہ نہیں جو ہمارے پاس موجود ہو، اصل طاقت وہ ہے جسے ہم لوگوں کے ساتھ مل کر استعمال کرتے ہیں۔ میں ہوں ارم منیر اور یہ تھا جیرمی ہائمنز کی فکر انگیز نیو پاور ٹیڈ ٹاک کا میرا مختصر سا جائزہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی شرکت کا بہت شکریہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔